So we're dealing with March 24 variant 22. I think March में एक ही variant होता है. You have about 2 hours to attempt. This one was the first March that came after the changes in the structure in 23. ठीक है. तो इससे पिछला मार्च अगर देखोगे 23 वाला, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा, या अगर हुआ भी है तो बिल्कुल वो पहला एग्जामिनेशन था, ये दूसरा एग्जामिनेशन है. बाय द वे, अब हम जैसे पीछे जाएंगे, जो अभी तक हम कर चुके हैं 24 25, their marking schemes have been much more elaborate and structured. एक consistency थी. Now, when we're going backwards to these previous exams, you're going to observe that the structures are not so well. बहुत कम लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में, क्लैरिटी इतनी वो नहीं आ रही है. जो पहले मार्क्स दे रहे हैं, जो लेटर इयर्स में मार्क्स दे रहे हैं, वो पिछले में नहीं दिए हैं, एंड जो पिछले में दिए हैं वो लेटर में नहीं दे रहे हैं. There is minor discrepancies that are taking place as we go backwards. So what I'm going to do is, while I'm explaining these, तो मैं आपको ये करूंगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि रिसेंट के अंदर क्या हुआ है, ताकि इनको तुम उस लाइट के अंदर देखो. ठीक है. So let's go. All right, let's begin. So we have March 2024. Case study comes on artificial intelligence. Obviously, that is one of our important ones also. कहते हैं, artificial intelligence is a form of technological progress. Whenever I hear this term, technological or technology, I'm thinking capital goods. I'm thinking PPC outward shift. I am thinking more productivity. I am thinking more economic growth. But I am thinking, along with the potential increase, unemployment might arise, structural unemployment. You remember हम जब structural unemployment पढ़ते हैं, तो उसमें technological unemployment is also part of that, which is much more permanent and can be very harmful for people. Just one word, it's supposed to connect to all of those things, or at least like in your brain, it should light up all those concepts. It involves computers or computer controlled robots engaging in tasks usually performed by humans. So many businesses invest in AI to reduce their costs, to increase their efficiency by reducing human errors, and to raise business revenues and profits. I think that's very clear. COVID-19 pandemic has accelerated this process because people had to, work from home and uh, cannot come closer and things like that. So from increased use of contactless card payment systems to large-scale investment in driverless taxis, in China, leading internet search company plans to follow some of its rivals in the US, and they want to do some like driverless taxis. Now, this is just one example that they've given to sort of like give you an idea कि जितनी भी वो manual type का काम है, labor type का काम है, even to an extent of somebody who's driving, who is using their cognitive abilities, you know, something like that can also be replaced uh, by 2030. So, nevertheless, the pace of growth in AI has raised concerns that it will increase unemployment. तो बात है. यूएस की एक स्टडी के अंदर क्या है, 38% जॉब जो है वो रिस्क के अंदर है बाय मिड 2030s. Today, Japan has about 200, 300 AI company. Obviously, they're going to be creating robots and things like that. And then you have China and US also, who are spending tons of money. So I think you're well aware of the dynamics of this particular uh, thing. Just a few years ago, the growth of the internet created similar fear. Just a few years ago. All right, I guess a decade or some ago.
तो यही प्रॉब्लम पहले भी आई थी कि इंटरनेट आएगा, वेबसाइट आएगा, यू नो व्हाट इज दिस गोना टेक अवे द जॉब्स। बट हमने क्या नोटिस किया कि यू नो व्हाट, इट एक्चुअली क्रिएटेड मोर जॉब्स रादर देन टेकिंग अवे। So, you know, maybe we don't have to fear so much for this scenario. So, as a result, some economists suggest that the movement towards AI is fundamentally change the world and the way we work and live, but will not lead to large rises in unemployment. So, AI technology may create more jobs than it would actually destroy, like we just said. So, nonetheless, अच्छा आर्टिकल के अंदर इन्होंने इफ यू नोटिस दोनों साइड की बात की है कि यू नो व्हाट, देयर आर स्टेटमेंट्स व्हिच इज सेइंग कि गड़बड़ भी हो सकती है, एंड देन देयर आर स्टेटमेंट्स व्हिच इज सेइंग कि यू नो व्हाट, पास्ट में तो इतना बुरा नहीं है. So maybe that might be useful in later on. Nonetheless, the danger remains that automation will lead to a society of winners and losers. ये बात तो डन, ठीक है जी. The newly created jobs will require new skills and significant investment in training youth people and retraining others, right? So, therefore, government may need to implement targeted policies to ensure that any changes to structural unemployment are only short-lived. So, कैसे करोगे? You remember the supply side policies? So, keep an eye on that. However, rising national debt, okay. So, however, rising national debt alongside with projections of low economic growth, आपके पास ये दोनों मसले उन्होंने बता दिया. अभी मैंने सप्लाई साइड का वर्ड यूज किया, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन तुम्हारी तरफ डाल दी है. एंड देन देयर सेइंग, देखें जी टेबल वन के अंदर देयर आर सम थिंग्स दैट वी वांट यू टू कंसिडर. तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? Selected macroeconomic indicators of Japan and USA in 2020 to 2025. ये जापान के तीन हो गए और ये यूएस के तीन हो गए और ये आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं. ओवर द इयर्स आपके पास 2020 से शुरू होते हैं एंड देन यू हैव स्टार्स. स्टार्स आर शोइंग दैट दीज आर फोरकास्ट. तो ये 2024 का पेपर है, राइट? तो 2024 का पेपर है, तो ये जो डेटा जहां से भी उठाया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर 2025 की प्रोजेक्शंस के साथ है. सोर्स इज 2021 का सोर्स. अच्छा, तो काफी पीछे का लिया हुआ है ये. ओके जी. बात अगर आप नोटिस करें तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. जापान के केस में जो गवर्नमेंट का डेट है वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है. तो ये 254 को समझो, इसका मतलब क्या है? अगर यूएसए की जीडीपी 100 बिलियन है, ठीक है, तो उनपे जो कर्ज है वो 250 के करीब बिलियन का उनपे लोन है. यू अंडरस्टैंड? इट्स अ हाईली इंडेटेड इकोनॉमी. कि मैं इट्स सिंपल कि मैं 1 लाख की तनख्वाह कमाता हूं और मेरे पे 2.5 लाख का कर्जा है. ना वन वुड से कि ये आई एम वेरी हेविली लेवरेज. बट इसको आप ऐसे नहीं सोचते हो कि जैसे कोई मैंने ये 2.5 लाख, ये 250 एक साथ पे करना है. मैंने तो इस पे इंटरेस्ट पे करना है. अब मेरे 2.5 लाख पे इंटरेस्ट बनता होगा 20,000, 25,000. ठीक है, ऑन अ हायर साइड में ले रहा हूँ 10% के हिसाब से. तो अगर मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं तो 20,000, 25,000 आई कैन स्टिल पे. तो जब तक मैं पे कर सकता हूं उस वक्त तक रेड फ्लैग्स नहीं होते हैं. बट अगेन दैट डजंट मीन दैट इट्स नॉट अ वेरी हाईली लेवरेज सोसाइटी. इट्स अ वेरी हाईली leveraged society, but it's a developed economy. So people feel that, you know what, they're not going to default on their debts. You know, reasonably okay country है. लेकिन अगर आप जीडीपी का डेट का रेशियो देखें तो 254, 256 बढ़ता है फिर गिरता है, फिर ऑलमोस्ट 251 ओवरऑल जरूर गिरा है डेट टू जीडीपी. लेकिन ये परसेंटेजेस के अंदर है. दीज आर नॉट लाइक एक्चुअल वैल्यू, राइट? इट्स परसेंटेज. जब जीडीपी का साइन नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकली दिस वुड आल्सो ग्रो. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं अगर आप नोटिस करें, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है. दैट इज समथिंग फेवरेबल प्रोजेक्शन के अंदर. और जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है
जीडीपी का ग्रोथ रेट इज स्लोइंग डाउन। तो ये थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि राइजिंग नेशनल डेट अलोंग साइड प्रोजेक्शंस ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो गिर रही है। डेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ऑनेस्टली एब्सोल्यूट नंबर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज गिर रहा है। अब अगर आपकी जीडीपी इज राइजिंग एट अ स्लोअर रेट, तो इवन इफ दिस परसेंटेज रिमेन्स द सेम, आपके ऊपर एब्सोल्यूट टर्म के अंदर डेट बढ़ ही रहा होगा। तो परसेंटेज और एब्सोल्यूट का ख्याल करना। यूएस के केस में डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो भी माइल्डली पहले गिरता है फिर बढ़ता है। तो यूएस के केस के अंदर तो वापस से प्रोजेक्शन इज सजेस्टिंग दैट इट विल बी ऑन अ राइजिंग स्ट्रीक। अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग एक्सेप्ट फॉर 2025, अगेन इट्स अ प्रोजेक्शन। और अगर आप इसको देखें रियल जीडीपी के नंबर्स आर स्टिल फॉलिंग। ठीक है जी। So let's talk about a few things. आसान से questions हैं. I felt that this entire paper was actually much more on an easier side. तो जरा देख लेते हैं. Using the table's information, compare the changes in projected real GDP growth rate. Okay, so what columns am I looking at? I'm looking at this and this. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कंपेयर। देखें जी, कंपैरिजन को कंपैरिजन की तरह से ही बताना प्लीज। द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज दिस। जापान का रियल ग्रोथ रेट जो है वो गिर रहा है। पहले वो -4.6 था, अब 0.6 के ऊपर आ गया है। फिर आप कहते हैं यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो गिर रहा है, पहले -3.4 था, 1.7 हो गया। यूर नॉट कंपेयरिंग, यूर जस्ट टेलिंग मी इसका क्या था और इसका क्या था। When you're comparing, your statements will be like this, that both countries are facing a fall in the real GDP growth rate. Both countries are experiencing a fall, right? As you can see also, they both are experiencing a fall. ठीक, ये हो गया एक कंपैरिजन। उसके बाद दूसरा कंपैरिजन आप क्या कर सकते हैं? दूसरा कंपैरिजन आप चेंजेस निकाल के दिखा सकते हैं कि इसमें इतना परसेंटेज हुआ और इसमें इतना परसेंटेज हुआ। दैट वुड बी अ वैलिड थिंग टू डू आल्सो। So according to them, this is what they're saying. Both countries experience a positive growth over a period. I think that is the fundamental one. और दोनों के अंदर जो है स्लो डाउन एक्सपीरियंस हो रहा है। ओवर द पीरियड जापानीज ग्रोथ इज स्लोअर देन द यूएस, क्योंकि यूएस के नंबर्स अगर तुम कंपेयर करो तो लेट्स टेक अ लुक एट, इसके कंपेयर करो तो 1.7 है, एटलीस्ट इट्स अ हायर ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू दिस वन विच इज 0.6। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक वन इज कि दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव में चले गए हैं। दूसरी बात, दोनों में स्लो डाउन का इफेक्ट नजर आ रहा है। तीसरी बात, यूएसए का ग्रोथ रेट इज मोर। अब दो मार्क हैं तो दो मार्क आपके ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। यू डोंट इवन हैव टू write like 3 4 points, but make sure that when you're writing it is compare. You don't compare, you don't get the mark. ठीक हो गया? स्पेशली इफ यू लेस देन डाउन के पहले इस साल से इस साल यूं गिरा फिर इस साल से इस साल यूं बढ़ा, इट्स नॉट गोना वर्क इन योर फेवर। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन। फिर उसके बाद बी के ऊपर आते हैं। बी के अंदर कहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट, दे नॉट यूजिंग द वर्ड एक्सप्लेन, दे यूजिंग द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है टू शो, टू ड्रॉ। ठीक है। द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एआई ऑन द जापानीज इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। देखें जी, ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया ना लॉन्ग रन का, ये बड़ी खास वजह से यूज किया है इन्होंने लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर आप शिफ्ट दिखाते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आपने शिफ्ट दिखाना है, कोई मूवमेंट नहीं दिखानी है, कोई किस्म का इन इन
अंदर के पॉइंट से बाहर के पॉइंट शोइंग कि आप बेहतर यूज ऑफ रिसोर्सेज कर लें, नथिंग लाइक दैट. दे हैवंट मेंशन्ड एनी गुड्स. To stick with our basic ones, capital versus consumer good. If you write just capital, you don't get the mark. If you write consumer, you don't get the mark. You have to write consumer good, capital good. Good A, good B is also acceptable. Your PPC curve should be downward, right? But you won't get a mark if you draw like this. You have to connect it to the axes. Once you connect it to the axes, तो फिर straight line भी बना सकते हो, because the question is not about increasing or constant. It's perfectly acceptable if you draw like this. The only thing that we're looking at is कि आपने इस कर्व को आउटवर्ड शिफ्ट दिखाना है. तो आपके जो दो मार्क्स हैं हम देंगे. एक आउटवर्ड शिफ्ट पे इस तरह से एरो मार्क करके जरूर दिखाया करो. और एक दूसरी चीज जो है वो आप लेबल्स को पक्का किया करो. डू यू नीड अ स्टेटमेंट? मेरी नजर के अंदर स्टेटमेंट जरूर दिया करो अबाउट द डायग्राम, के समथिंग लाइक the PPC diagram above shows an outward shift in the diagram due to increased economic capacity or something like that, right? Due to AI. Okay, so always give a statement like this. Although I don't think there would be a mark for it, but जरूर दिया करो. ठीक है. Then they're saying, with the help of a demand and supply diagram, consider the impact of additional investments in AI on the price and output of a US maker. Consider the impact of additional investment. I think बड़ा ही सिंपल सा आपने अपने डायग्राम्स बनाने हैं. डायग्राम कौन सा बनाओगे? प्लीज प्लीज प्लीज, माइक्रो डिस्कशन चल रहे हैं. अगर वो चाहते कि तुम मैक्रो वाले डायग्राम्स बनाओ, तो दे वुड हैव आस्क्ड यू ADAS डायग्राम के थ्रू बताओगे, राइट? सो यहाँ पर आपने प्राइस लिखा है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिखा है. बिकॉज यूएस कार मेकर की बात हो रही है ना, एक पर्टिकुलर फर्म की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है. तो इट्स अ माइक्रो कॉन्सेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आपके पास सॉरी डिमांड है, सप्लाई है, और आपने इस तरीके से इसको बना लिया. Up with the help of a diagram, consider the impact of additional investment in AI. I think most of us will be thinking कि देखें जी, AI आने की वजह से फर्म्स की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा, और जब फर्म्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट की तरफ जाएगा, और उसकी वजह से जो फर्म्स का आउटपुट है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द राइज इन प्रोडक्टिविटी, एंड गुड्स की जो प्राइसेस हैं उसमें ड्रॉप आना चाहिए. मेरी नजर में, क्योंकि ये कंसिडर का क्वेश्चन है एंड वी बीन डूइंग दिस, कंसिडर द इम्पैक्ट, तो मेरी नजर के अंदर, इनफैक्ट लेट मी शो यू द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस, बिकॉज आई हैव आई थिंक कि ये पुरानी मार्किंग स्कीम है कंपेयर टू द न्यू वन, एंड आई हैव अ लिटिल इशू विद दिस. मैं जो तुमको पुराना जो पहले हम नए वाले एसेस कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, आई फील दैट दिस मार्किंग स्कीम हैज अ प्रॉब्लम which they would have, they नई वाली के हिसाब से there is some गड़बड़ happening here. Correctly labeled diagram showing an equilibrium. No issue. Demand, supply, price, quantity, equilibrium, all the marking. सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट, न्यू इक्विलिब्रियम की मार्किंग, दो मार्क मेरे डायग्राम में वो है. एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस विद क्लियर रेफरेंस टू डायग्राम प्रोवाइडेड. आपने वो शिफ्ट क्यों हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, प्राइसेस में ड्रॉप आएगा. देन दे सेइंग द फोर्थ मार्क इज फॉर करेक्ट न्यू इक्विलिब्रियम. कंसिडर के क्वेश्चन में तो इवैल्यूएशन का एक मार्क होता है, दे आर नॉट गिविंग एन इवैल्यूएशन का एक मार्क.
Will it have the desired impact that you're looking for? Where is that evaluative statement? Where is that statement where we might have to discuss a counter, or we might have to discuss the limitation? For example, for example, in my diagram, I know that if the supply curve shifts to the right like this, the prices will fall and the quantity will increase. But I can definitely make an evaluative statement here and say कि अगर डिमांड कर्व inelastic है तो प्राइस में ज्यादा ड्रॉप आएगा, क्वांटिटी में मे बी ज्यादा नहीं आएगा. ओके, दैट्स वन थिंग. आई कैन इवन डिस्कस कि फर्म जो इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रही है एआई के अंदर, तो शुरू के अंदर तो दे विल हैव टू इन्वेस्ट इन इट, राइट? तो हो सकता है कि शॉर्ट रन के अंदर तो उनका एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई माइट शिफ्ट टू द लेफ्ट, because their cost of production will go up because of these research and development and investments that they're doing. Cost of production goes up in the short run. However, in the long run, it's going to shift the supply curve to the right and have the desired impact. तो मेरी नजर के अंदर यहाँ पर एक इनकंसिस्टेंसी थी जो कि नए वाले के हिसाब से है. तो प्लीज मेक श्योर कि कंसिडर का क्वेश्चन भी हो तो इसको जरूर आप वो इवैल्यूएशन और एक काउंटर डिस्कशन को जरूर 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 बात करें. ठीक है, नई मार्किंग स्कीम के हिसाब से आई थिंक दे विल फैक्टर दैट इन. फिर उसके आगे बढ़ते हैं. Assess the possible impact of unemployment in Japan as a result of the increased investment in AI. All right, so इसमें क्या होगा? पॉसिबल इम्पैक्ट 6 मार्क का क्वेश्चन है. नई मार्किंग स्कीम के हिसाब से दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. 2 मार्क फॉर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, right, and 2 marks for some sort of negative impact, and then 2 marks for an evaluative statement. All right. In fact, when we were reading, I think we had this discussion also कि इसकी आर्टिकल के अंदर they have made some supporting arguments also that can be used, and then you can use those and further expand on it, right? तो क्या हो सकता है? For example, assess the possible impact on unemployment in Japan. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इफ वी गो बैक, तो जब एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो दे हैव मेड अ स्टेटमेंट कि इसकी वजह से इट इज एक्सपेक्टेड कि जब इतनी सारी कंपनीज इन जापान आ गई हैं और वो एआई के ऊपर काम करेंगी, तो जैसे यूएस के अंदर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ 38% जॉब लॉसेस, तो उसी तरह से जापान के अंदर वी कुड आल्सो एक्सपेक्ट a fall. Why? Because they're going to be replacing, the technology is going to be replacing the people who are doing those meaningless sort of jobs, like a taxi driver replacement की जो बात हुई हुई है, right? So I'm going to use the statement from here and then further elaborate to prove my point कि AI is basically going to replace that. ठीक है. फिर मैं नीचे की एक स्टेटमेंट जो थी हमारी, which was talking about कि पास्ट के अंदर भी ये एक इशू आया था इंटरनेट के केस के अंदर, और फिर हमने ये देखा कि इनफैक्ट many jobs were created as a result of this. तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से एआई आने की वजह से you will require smart and intelligent workers, who have new skills. So, so those people will actually will create jobs, and they will be very good paying jobs, which will improve their living standards, right? And then my final evaluative statement, which could be depending on how quickly the countries are adopting. तो अगर बहुत तेजी से ये changes आएंगे और ये implementations आएंगी, तो we can expect
Structural unemployment, right? You can expect the structural unemployment to take place, but then you need the government's policies to come in and sort this out. That would be your evaluative side. Let me show you what they're suggesting. D के अंदर they're saying in short run many jobs will be lost. AI रिप्लेस करेगा उनको. तो स्टेटमेंट यानी आर्टिकल को यूज करना और फिर एग्जाम्पल को देना, that would further solidify basically. तो यहाँ पे दे वांट एग्जाम्पल ऑल्सो. आई थिंक आर्टिकल में एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर. फिर वो कह रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर जो है बेटर जॉब्स माइट क्रिएट. तो एंड लाइक एआई मशीनरीज के लिए हाईटेक वर्कर्स आपको चाहिए होंगे, समथिंग अलोंग दोस लाइंस. To your final evaluative statement, max of 5 marks plus one evaluated conclusion. Again, this is inconsistent with the recent ones that we've seen. Recent ones के अंदर it is two, two, and then two for evaluative statement along with conclusion. थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे फील है कि ये थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट रन लॉन्ग रन किया है इसको. तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक इवेल्युएटिव के डोमेन में ले गए बात को. But that should have been your final evaluative conclusive statement in this one. ठीक है. Your evaluation, I think, can be in terms of a short run and a long run. It can be in terms of how quickly or slowly you're adopting, how calculated you're adopting to AI. क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ था कि AI की जो अडॉप्टेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो क्योंकि बहुत तेजी से हो रही है. तो वर्कर्स की जो अपग्रेडिंग है, अडॉप्टेशन है, वो दैट माइट नॉट हैपन एट दैट स्पीड. So you might have problems in the short run, but in the long run, it would sort of work out as in the past it has. तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होना चाहिए. Again, I have some issues with the D वाला इसका marking scheme compared to the recent ones that we've been doing for the very long time. फिर ई में कहते हैं assess the likely impact of a growth of AI on specialization and trade of a country such as Japan. ठीक है जी. सेम आइडिया. 2 मार्क्स के लिए स्पेशलाइजेशन. मेरा ख्याल में तो जरूर पहले डिफाइन कर लिया करो ये टर्म को कि स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है. व्हेन अ कंट्री concentrates on production of a good or a process based on the comparative advantage. uh, फिर उसके बाद यू कैन मूव ऑन टूवर्ड्स मार्क मिले या ना मिले. ठीक है. एक अच्छा सा हैवी सा वर्ड यूज हुआ है, माइट एज वेल प्लेन एंड. तो लाइकली इम्पैक्ट में क्या है, जब एआई ग्रो होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, नई फर्म्स लगेंगी, नए किस्म के प्रोडक्ट्स और इनोवेशन आएंगी, राइट. चैट जीपीटी के आने से डू यू थिंक क्या इकोनॉमी का जीडीपी गिर जाएगा? मेरे ख्याल में तो जीडीपी बढ़ेगा. जब जीडीपी बढ़ेगा, somebody is going to earn more. Economic growth is likely to happen. You might specialize in other goods now. In fact, the goods you're already specializing in, agriculture. अब एग्रीकल्चर के अंदर आप एआई को इंटीग्रेट कर लें तो आपकी यील्ड भी बेहतर हो सकती है, आपकी ज्यादा बेहतर मॉनिटरिंग भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ पाकिस्तान, लाइक जापान इज आल्सो एग्रीकल्चर साइड के ऊपर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलायंस ऑन देयर ओन पर्सनल, एटलीस्ट इंटरनल इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर. बट इट्स अ टेक्नोलॉजिकल हब ऑल्सो. अब जब आप एआई यूज करते हैं सैटेलाइट के थ्रू अपने फार्म्स को अगर आप मॉनिटर करें, तो देयर आर टेक्नोलॉजीज दैट हैव कम व्हिच इज यूजिंग एआई कि वो आपके फार्म को ज्यादा बेहतर मॉनिटर कर सकते हैं. और जब वो मॉनिटरिंग ज्यादा अच्छी होगी तो आपकी यील्ड में भी इंप्रूवमेंट आएगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, राइट. So those would be the advantages of it. In आसान terms, we're talking about कि आपका आउटपुट ज्यादा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आप एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा जिसकी वजह से आपकी करेंसी स्टेबल हो जाएगी एंड सो ऑन. बट ऑन द काउंट अगेन 2 मार्क के लिए लिखा,
अब उसका काउंटर कि हाउ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, देखो ये लास्ट वाला बिट इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बीच में लेकर आया ना, तो क्योंकि उसने लिखा है स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, इफ आई डोंट डू एंड ट्रेड then probably one mark is what you're getting. You're not getting the second mark for no matter how much you write. फिर उसके बाद हम आते हैं the negative effects of AI in this. So obviously unemployment is one of the major ones. You might lose comparative advantage if you don't correctly adopt to these. आपकी जो एक ऑलरेडी इकोनॉमी थी, वो वाली जो आप चीज़ों पे रिलाई करते थे, जो इसमें आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज था, but if you're adopting to AI in some other industries, तो वो वाली industries against other countries are going to lose their advantage and they're going to start having troubles over there in that instance. You should use the idea of Japan because they are talking about country like Japan. So definitely you should use the idea of the country. Uh, like for example, yes, like you say कि जापान के अंदर जो है robots वगैरह बहुत सारे होंगे. So for them using robots will actually be on the beneficial side, right? But you do have issues like जब आप specialization करते हैं AI को use करते हुए, तो then there is always a risk of something called an over specialization. You know what that is? When you have a very heavy reliance on one type of industry. ठीक है, तो फिर if anything goes wrong in that and if you're not able to compete with the other competing economies, then your trade takes a very big hit and you might experience like some serious deficits on it and your industry suffers and you have like a structural unemployment issue that might take place as a result of that. ठीक है. So let me show you what they are suggesting. Again, marking scheme के अंदर I have an issue. They're saying up to 3 marks you can get for this, which is inconsistent to the recent one. Uh, Assess the likely impact of the growth of AI on the specialization and trade, right? So they're saying potential benefit of using AI, जिसमें प्रोडक्टिविटी का टर्म इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव एडवांटेजेस इंप्रूव हो सकता है, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंप्रूवमेंट आएगी एंड सो ऑन. सो दे हैव डेल्ट विद स्पेशलाइजेशन. ये देखो वो वर्ड ये दोनों स्पेशलाइजेशन के वर्ड्स हैं और ये हमारा ट्रेड का वर्ड. फिर उसके बाद फ्रॉम द नेगेटिव साइड, ओवर स्पेशलाइजेशन इज कंसिडर्ड अ नेगेटिव आइडिया. एक्सेस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल, जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप एग्जॉस्टिव रिसोर्स यूज करते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन के डिसएडवांटेज हो गए. ओवर रिलायंस डिसएडवांटेज हो गया ऑफ वन इंडस्ट्री. थोड़ा सा मिसिंग है बट ट्रेड के साथ उसको कनेक्ट करना चाहिए था कि अगर उस इंडस्ट्री फेसेस a fall in the demand, that your whole export and trade will get disrupted, and obviously structural unemployment. And then your final evaluative statement. AI आप adopt कर रहे हैं for country like Japan. So even if your advantages, disadvantages में तुम जापान को यूज नहीं करो, evaluation में जापान को यूज करना must है. So you could write about a country like Japan where there are like article में लिखा है there are about 200, 300 firms. So I can say that they are at the forefront of the AI, right? So for them to utilize AI in their major industries, खास तौर पे वो industries where they might be facing a little too much competition from international world, they are in a very good position to actually use those AI to get themselves an additional edge, right? और उस एज की वजह से they can benefit more. However, structural unemployment, अगर fast usage करते हैं for that edge, structural unemployment can be a very leading problem for their economy. Because remember, Japan is amongst the top 10 in world population also, so they have a very large labor force. ठीक है जी. तो ये आपका ओवरऑल बात हो सकती है. सो दिस इज हाउ आई वुड हैव आंसर दिस.
based on the current situation. All right, moving on. So, very easy case study comparatively. आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 के ऊपर आते हैं। दो एसेज हैं हमारे पास, कौन से हैं? With the help of demand and supply diagram, explain how the introduction of indirect taxes affects equilibrium in a market, and consider the extent to which incidence of the tax will fall on the consumers. All right, so these questions are much more on the easier side, I feel. So पहली बात, डायग्राम के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस का मांगा है इन्होंने। A few things that you should define before moving into the question. पहली चीज क्या है? पहले तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपनी डेफिनेशन ठीक करो प्लीज। ग्लॉसरीज आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस, प्लीज इंप्रूव। Indirect taxes are imposed on goods and services, ठीक है, पहली बात। It increases the price of goods. Purpose क्या है? The purpose is to discourage the consumption of goods. Two things which matters the most when you're writing indirect taxes की definition. एक, ये क्या होता है? तो आप कहते हो ये impose होता है on goods and services, ठीक है। दूसरी चीज, ये लगाते क्यों हैं? ज्यादातर आप ये लगाते हो डीमेरिट गुड्स या सर्टेन गुड्स को डिस्करेज करने के लिए, ठीक है, दैट्स द पर्पस। उसके बाद आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम भी बड़ा सिंपल सा है आपका, डायग्राम में कुछ भी नहीं है। यू शुड एक्सेल इन मेकिंग दीज डायग्राम्स। थोड़ा सा बस लेबल्स का ख्याल किया करो। यू हैव प्राइस, you have quantity, a downward sloping demand curve. Demand and supply curves don't have to be touching the axes. Equilibrium. E0, ये भी मार्क कर ही दिया करो वैसे तो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगा है तो फिर क्या होगा। सो वी से इनडायरेक्ट टैक्स लगने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करता है कुछ इस तरह से। उसके लेफ्ट पे शिफ्ट होने की वजह से एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है P1 और क्वांटिटी गिर जाती है Q1। I will even mention this now from the current status. डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। I think you should mention that. It's not mentioned in the marking scheme, but recent times के लिए अगर किसी एक कर्व में शिफ्ट आ रहा है तो जिसमें मूवमेंट आ रहा है मेरी नजर के अंदर अब से तुम आदत डालो कि ये बता दो, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन इन द रीसेंट वंस दैट दे हैव बीन डूइंग दैट, ठीक है। तो ख्याल रखना इस चीज का, जस्ट इन केस, यू नेवर नो, दे माइट पुट अ मार्क फॉर दैट। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ इट गोज। इसका फिर आपने राइटअप करना है। राइटअप के अंदर आई लाइक आई मेंशन द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इज कि कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से सप्लाई गिर जाती है जिसकी वजह से प्राइस में इंक्रीज आता है और क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज आता है। ये अपने राइटअप के अंदर तुम इसकी आदत डालो कि दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट इट। आर वी गुड? ओके जी। फिर उसके बाद दे फर्दर ऑन से एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू व्हिच the incidence of tax will fall on the consumers. इनफैक्ट जब मैंने इतना सारा किया ही है और अपना ये डायग्राम और ये सारी चीजें मैं समझा ही रहा हूं तो उसी पॉइंट के ऊपर इन टैक्स बर्डन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाई नॉट शो दैट आल्सो। तो एट ओरिजिनल इक्विलिब्रियम दिस इज द टैक्स रेट
P1 से P2 इज द टैक्स रेट। ठीक है। फिर जितने से इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हुई है, विच इज दिस पोर्शन राइट हियर, P0 से P1, ये आपका कंज्यूमर का बर्डन होता है। ठीक। क्योंकि प्रोड्यूसर की बात नहीं की है तो यू डोंट नीड टू, लेकिन यू शुड नो कि ये बाकी जो लेफ्ट ओवर होता है ये प्रोड्यूसर का बर्डन होता है। वी हैव लाइक plenty of lectures to explain कि ये इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेस होते कैसे हैं। मेरे ख्याल के अंदर इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस कि आप प्रूव कर दें बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम। देयर इज नो मार्क फॉर यू टू शो कि कंज्यूमर बर्डन क्या होता है, प्रोड्यूसर बर्डन क्या होता है, बट मेरी नजर के अंदर डू इट, यू नेवर नो। ठीक है। तो अब किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट द इंसिडेंट फॉल्स ऑन द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। अब इसमें तुम्हारी जो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है, दैट इज अबाउट, देखें जी, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व्स इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, if your PED is inelastic, it's less than 1, it is inelastic, तो आपको क्या पता है inelastic के केस के अंदर that the percentage rise in the price is much more than the quantity fall. So because percentage rise in the price will be more, equilibrium price ज्यादा से बढ़ेगी जब ये inelastic होगा, तो फिर consumer का burden will be more. Because they will have to bear, right? Necessity is the case. However, agar PED is greater than 1, which means elastic, that the percentage change in the price change is less than the percentage change in the quantity, तो उस केस के अंदर, sorry, उस केस के अंदर the consumer burden tends to be on the low side. 2 mark का evaluative statement है. So in conclusion, uh, the consumer or the producer burden या incidence of tax depends on the price velocity of demand and supply. मैंने supply की बात नहीं की है, लेकिन अगर PES elastic होता है, अगर PES greater than 1 होता है तो consumer burden high है, और अगर PES less than 1 inelastic होता है तो producer burden is on the high side. ठीक है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट अनलेस कि कोई एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होता है इसके ऊपर, पूरी इलास्टिसिटी के ऊपर। फिर वो क्वेश्चन फिर किस तरह से होता, फिर वो स्टार्टिंग के अंदर जो है तुमसे कहते कि यूजिंग द डिमांड सप्लाई डायग्राम एक्सप्लेन हाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच। वैसे ऐसी क्वेश्चन होता, ऑनेस्टली क्वेश्चन ऐसी होता कि एनालिसिस आप करते ये पूरी चीज का, 3 मार्क के लिए वो तुमको दे देते कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बताओ किस तरह से अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को यूजिंग द डायग्राम। मेरी नजर में तो अब ये 3 मार्क के लिए ना, पहले 3 मार्क के लिए ये होता, दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट 3 मार्क्स। फिर टू व्हाट एक्सटेंट वुड इट अफेक्ट, तो उसके अंदर फिर क्या होता कि अगेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एनालिसिस शुड हैव बीन दिस इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस का, कि इन इलास्टिक के केस में क्या होता, इलास्टिक के केस में क्या होता। दिस शुड हैव बीन योर एनालिसिस कंसिडरिंग आज की मार्किंग स्कीम, राइट। और फिर इवैल्यूएशन के अंदर योर फाइनल इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट के ऊपर एनालिसिस में जैसे हमने देखा कि जब डिमांड कर्व इन इलास्टिक होता है तो कंज्यूमर हैज टू बेयर मोर टैक्स बर्डन, जैसे इन इलास्टिक इज यूजुअली नेसेसिटीज, नेसेसिटीज में प्रोड्यूसर्स विल पुश द बर्डन ऑन टू द कंज्यूमर्स, लेकिन इलास्टिक होगा और कंज्यूमर थोड़े से वॉलेटाइल होंगे इन देयर स्पेंडिंग, तो प्रोड्यूसर्स विल नो दैट वी कैन नॉट पुश द बर्डन ऑन टू देम, so we would have to take the burdens. Yeah, so I have certain serious dispute with 2A का marking scheme based on the current scenario. तो मेरी नजर के अंदर be safe, write everything, जो एनालिसिस में काउंट होना होता वो एनालिसिस में काउंट हो जाता, और जो नॉलेज के अंदर होता वो नॉलेज में हो जाता।
with your final evaluation. Stick with that idea because marks तुम्हारे को वहीं से पूरे मिल जाते हैं फिर उस केस के अंदर. uh, So there's a question that if in your diagram there is high consumer burden and producer burden, so is that bad? No, no, मसला नहीं है क्योंकि डायग्राम उन्होंने मांगा है indirect taxes कैसे इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को. That's what they've asked the diagram. ठीक है, they haven't asked the diagram to show the tax की वजह से incidence के ऊपर. So that is where the diagram need is limited to. Can you make a diagram in evaluation? It's a waste of time, right? Write up is more important. फिर आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर. पार्ट बी के अंदर अब वो क्या कहते हैं. So let me go into part B, separate it a little. Assess whether the improved provision of information is likely to be the best method to reduce the consumption of demerit goods. I think we've done this plenty of times. A few pointers आज के हिसाब से what I would say is whether it is there in this old marking scheme or not. Please define demerit goods very briefly. Maybe you get a mark, maybe you don't. Okay, demerit goods are harmful goods. They are overconsumed due to information failure. ठीक है. फिर असल जो क्वेश्चन है, अगर हम improve कर दें provision of information, so is it the best method, right? So what does that mean? सबसे पहली चीज, you talk about how provision of information will affect the demand for demerit goods. So when we're talking about provision of of information, what we're talking about is that whether the government or the private sector gets involved in explaining the harmful effects of consuming demerit goods. So you want to basically the impact of people knowing the harmful effect. You can do that through campaigns. You could suggest advertisement campaigns. But the key thing that we're looking for is you're able to make the connection that this will cause a fall in the demand for demerit goods. Okay? That is what the major connection that we're looking for. Okay, this is what this will do. And therefore, they're going to reduce the demand for demerit goods. People will be well aware, okay, of the harmful effects, and they're going to make conscious decision to consume less of that good, right? Awareness. And this could be through advertisements and campaigns. But then you know that when you have discussed this, then you are required to talk about how it may not work. ठीक है. So how it will not work के अंदर you have plenty of reasons. Like for example, एक तो जो आपकी limitation के point of view से हम बात करते हैं, that there is always like peer pressure का issue, which is there, and people will continue to consume the goods, right? Habitual हो सकता है, लोग irrational है, information failure है. There is always, even though हम कह रहे हैं कि we're going to improve the information, there will still be always limitation of information that people will still lack. Or maybe demerit goods are usually habitual goods in या PED जो है उनका less than 1 यानी inelastic होता है. So they will continue to consume those goods and they might not give up on that, and that will not shift the demand curve to the left, right? Addictiveness is perfectly fine too.
फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स तुमको सजेस्ट करने हैं इसके। ऑल्टरनेटिव्स के अंदर देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जैसे ऊपर तुमने बात की है टैक्सेशन, indirect taxation on goods and services. You can talk about that, how they raise the price and lead to fall in quantity demanded. But again, I think that same point will come into play, that because this is an addictive product, तो addictiveness की वजह से chances are कि इसकी जो quantity demanded में fall है, that might not happen, right? That might not happen because of the PED is less than one. So that would be sort of like the limitation of it. फिर उसके बाद you want to suggest, if you want to suggest, you can suggest another one. If you feel कि यार, you know what, I should talk about more because best लिखा है, you just need at least two, right? But if you want to go for like a minimum को भी explain करना चाहते हो, minimum, what am I talking about? I'm talking about the price legislation, minimum price control, sorry, minimum price control. तो जब आप minimum price control लगाते हैं, तो आपको पता है कि it is above equilibrium लगती है, मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से मार्केट में जो प्राइसेस है वो ऊपर चली जाती हैं और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो गिर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीईडी लेस देन वन इन इलास्टिक है, देयर माइट नॉट बी अ मेजर ड्रॉप, या फिर आपने कितना मिनिमम लगाना है टू हैव अ रीजनेबल इफेक्ट। अगेन, कंटेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, or should not be the problem. I should correct myself. Content should not be the problem. Structural को अगर तुम सही से समझ जाओ, it's these policies and we've been talking about these policies for the longest time. अब इवैल्यूएशन में तुम क्या करना चाहते हो? देखो, उन्होंने सवाल पूछा है, is it the best method? मेरा conclusion is that it's not the best method. It honestly it relies. So I think I might have, no, I don't have a sample of it. But other than the evaluation, let me just clarify this. लिखते हैं, consideration that full assesses the relative effectiveness of the policy analyzed in reducing the consumption of demerit goods and arrives at a reasoned conclusion. अब सुन लो मेरी बात. Once you've done both side arguments for alternative and all, you start your essay and you say, in evaluation, okay, the effectiveness of the provision of information depends on the quality of the advertisement campaign and the money invested and the maximum reach of the awareness. And it also depends on how the consumer responds to it, right? So the government has to undertake financial obligations to inform the population of the harmful effects, but the impact is uncertain. On the other hand, taxation is a financial effect which raises the price of the goods and can discourage the consumers from consuming the good. The government can use a combination of the two policies because indirect taxes can be used to have a short run impact, whereas awareness can have a much larger impact in the long run. Do you understand me here? Basically, मैंने क्या किया, इन evaluation करके मैंने पहले sum up किया ऊपर के analysis को और फिर उसको एक short run, long run का angle दे के एक final conclusion मैं लिख लूंगा
that awareness campaign is not the best possible approach for the short run, although it may be effective in the long run. ये मेरा फाइनल कंक्लूजन हो गया कि बेस्ट है कि नहीं है, ये मेरा आंसर है. I hope that makes sense to you, but this is how you're supposed to add value. जब आप कहते हैं ना कि मेरे इवैल्यूएशन के अंदर चैट जीपीटी मुझे मार्क्स नहीं दे रहा, तो द थिंग इज इन इवैल्यूएशन के अंदर जो तुमने ऊपर के एनालिसिस के पॉइंट्स को लिख लिया, दैट मे और मे नॉट गिव. मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एग्जामिनर को ट्रिक करने के लिए तुम ऊपर की उसको सम अप करो, लेकिन अगर इवैल्यूएशन में मार्क्स चाहिए तो एक वैल्यू एडिशन करना जरूरी है जो तुमने ऊपर एनालिसिस में नहीं किया हुआ है. यू अंडरस्टैंड? एंड दैट इज बेसिकली व्हाट विल show a volume to your evaluation and take you to a level 2 answer. ठीक है, 4 मार्क के अंदर अगर तुम सिर्फ सम अप करके एक कंक्लूजन लिख दो ना कि बेस्ट है कि नहीं है, मैं तुमको 2 मार्क दे दूंगा. तुम शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात नहीं करो, लेकिन ऊपर जो एनालिसिस फॉर अगेंस्ट, देन इन इवैल्यूएशन यू सम इट अप, इन कंक्लूजन इट इज नॉट द बेस्ट, मैं 2 मार्क इवैल्यूएशन तुमको दे दूंगा. आई वुड हैव गिवन इट. ठीक है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन को लाओगे तो फिर मैं तुमको लेवल 3 के ऊपर भी, लेवल 2 के ऊपर ले जाऊंगा. Okay, so let's hope that every examiner does that. I'm telling you, there is discrepancies in examiners checking, especially for evaluation. लेकिन ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि ऊपर अगर तुमने फॉर अगेंस्ट नहीं किया ना, तो इवैल्यूएशन तो मिलेगा ही नहीं, तुम जितना इन इवैल्यूएशन करके लिख लो. काउंटर नहीं करोगे, मसला हो जाएगा. ऑलराइट. With the help of a formula, explain the meaning of income elasticity of demand and consider the extent to which a rise in income will increase the consumption of all goods and services. Evaluation मुझे पता लग गई है. All. Will it for all. उससे पहले 3 मार्क के लिए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करने जाऊंगा? Explain the meaning of income elasticity of demand. YED measures the responsiveness in quantity demanded for a good due to change in income. उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन द इनकम. और क्या इंफॉर्मेशन दूंगा? और मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नॉर्मल गुड कंसिडर किया जाता है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ये इंफीरियर कंसिडर किया जाता है. अ, अगर वाईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इलास्टिक है, जिसका क्या मतलब है? दैट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम. लेकिन अगर लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक है, विच मीन्स कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारी चीजें डाल दी कि कोई चांस ही नहीं लेना मैंने कि कुछ भी चीज मिसिंग हो इसके अंदर. ना ऑब्वियसली जो एनालिसिस है, एनालिसिस तो ये है कि भाई राइजिंग इनकम के साथ जरा मुझे बताएं कि क्या होगा. ठीक हो गया. तो फिर मैं बात करूंगा टू व्हाट एक्सटेंट अ राइज इन इनकम will increase the consumption of all goods and services. Okay. So rise in income की वजह से क्या होगा? तो this is what I will do over here. भाई जब इनकम राइज होगी तो मुझे पता है डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ता है. ये मुझे पता है, ये नॉर्मल गुड्स का सिनेरियो है. इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज, मैं वाईडी का जो परसेंटेज, जो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको यूज करते हुए मैं तो ये बात को एक्सप्लेन करूंगा कि देखें जी, कि अगर there is a 10% increase in income and because of that there is a 15% increase in the demand for my good, so my value will be positive 1.5. And like we mentioned, normal goods are positive in value. तो राइजिंग इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ ये रिलेशनशिप है. However,
अगर द गुड इन डिस्कशन, समटाइम्स क्या होता है कि राइजिंग इनकम के साथ डिमांड गिर जाती है, वो हमारे इंफीरियर टाइप के गुड्स होते हैं। फिर मैं वही फॉर्मूला यूज करके वाई डी का आई विल शो कि भाई वाई डी के केस के अंदर if there is a 10% increase in income, there are some times that you want to move away from certain goods. So you have a negative value, and negative sort of signifies that it's an inferior good. इस तरह की मैं डिस्कशन लेके जाऊंगा, और मैंने एनालिसिस कर लिया। अब मेरी फाइनल इवेल्युएशन के अंदर मेरी बात हो रही है कि भाई राइज इन इनकम विल इंक्रीज द कंजम्पशन फॉर ऑल गुड्स और नॉट। तो वो तो हमने एनालिसिस में डिस्कस कर ही लिया है कि भाई नॉर्मल और इंफीरियर का सिनेरियो, इफ योर इनकम इज राइजिंग, पीपल विल वांट टू बाय लग्जरी गुड्स विच आर नॉर्मल गुड्स, नेसेसिटी और लग्जरी, जो कि इन इलास्टिक और इलास्टिक में ब्रेक डाउन होता है। वैसे तो चाहो तो वो भी कर सकते हो, एंड दैट वुड बी जस्ट फिनोमिनल इफ यू डू दैट। Even lesser marks for us to cut in anyways. You remember हमने क्या बात की थी? अगर YD पॉजिटिव हो आपका और वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आप कहते हो ये तो लग्जरी गुड्स है, ये आपके लग्जरी गुड्स है। राइज इन इनकम विल हैव अ मच लार्जर शिफ्ट इन दैट। लेकिन अगर आपका YD लेस देन 1 है, तो हमने कहा था भाई लेस देन 1 तो नेसेसिटीज का होता है, दैट मीन्स कि इनकम बढ़ेगी, स्मॉल राइज विल हैपन। So that's a fantastic. If you do that, जबरदस्त हो जाएगा. If you write all of that, your essay is safe, right? Because again, I'm telling you, marking schemes जो है ना, वो कुछ भी हो सकती हैं। मेन चीजें तुम्हारी हर वक्त होनी चाहिए उसमें। एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ YD, इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से 1 मार्क। फॉर्मूला 1 मार्क, 2 मार्क हो गए। नॉर्मल और इंफीरियर का समझाना, वो नीचे तुम्हारे आंसर में कवर हो गया। इनकम गोज अप, डिमांड गोज डाउन, 3 मार्क। पॉजिटिव वैल्यू होगी, यूजेस अ डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और सो डायग्राम क्योंकि मांगा नहीं है तो मैंने इसलिए बनाया भी नहीं है, या फॉर्मूला टू शो व्हाई एन इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन, तो मैंने फॉर्मूला वाला अप्रोच यूज किया है। दैट एक्सप्लेन्स, एंड दिस शुड जस्टिफाई विद एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो वो नॉर्मल, नेसेसिटी, लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, यू आर गुड। 1 mark for a valid explanation that if a good is inferior, यहाँ पे if I see मुझे ज्यादातर नॉर्मल की ही बात नजर आ रही है। I have a dispute over here. I think this is wrong from the current point of view. एनालिसिस के अंदर दोनों नॉर्मल और इंफीरियर का डिस्कशन होना चाहिए था, और फिर इवेल्युएशन के अंदर यू हैड टू मेक अ फाइनल इवेल्युएटिव स्टेटमेंट ऑन कि जब इकोनॉमी में इनकम राइज होती है, तो एज डिस्कस्ड इन द एनालिसिस, नॉर्मल के अंदर डिमांड राइज होता है, इलास्टिक के केस में बड़ा राइज आएगा, इन इलास्टिक के केस में छोटा राइज आएगा। लेकिन अगर गुड इंफीरियर होंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ फॉल। तो दैट इज अ लाइकली रियलिटी। कंज्यूमर के लिए जो, अब मेरी एडेड वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, कि कंज्यूमर के लिए जब इनकम बढ़ती है, राइट, तो इनकम की वजह से वो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, ये शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, इन चीजों के ऊपर इफेक्ट करती है। या वो गुड जो है वो उनकी इनकम का कितना हिस्सा लेके जाता है, वो कितना इनकम इलास्टिक है और कितना इनकम इन इलास्टिक है। मेरी नजर में इवेल्युएशन शुड हैव बीन अबाउट दैट, एंड देन योर फाइनल इवेल्युएशन दैट इट विल नॉट इंक्रीज कंजम्पशन फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मेरी नजर के अंदर ये इसका करेक्ट आज के जमाने के हिसाब से इसका ये होना चाहिए था। एनालिसिस के अंदर अगर तुमने 2 गुड्स और इस क्वेश्चन की एक्सटेंट को बात नहीं की है, तो आई थिंक देर इज अ प्रॉब्लम देयर। आई फील दिस मार्किंग स्कीम हैज अ प्रॉब्लम हियर। करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से इट माइट चेंज बेस्ड ऑन करंट स्टैंडर्ड। ओके जी। फिर आप आते हैं नीचे वाले पार्ट के ऊपर, 3B के ऊपर। Assess whether an estimate of price elasticity of demand for a product is likely to be more useful. तो मेरा final conclusion is about more useful. ठीक है जी, you don't do that, you lose a mark in the end after doing every single thing.
to estimate the price, sorry, is likely to be more useful to a firm than an estimate of price elasticity of supply. So you know what to do. PD को डिफाइन किया, वैसे तो वो ऊपर नहीं किया हुआ। पीडी को डिफाइन किया, पीडी को किस तरह से रेवेन्यू के साथ कनेक्ट करने के लिए इलास्टिक और इन इलास्टिक का सहारा लेते हुए आपने प्राइस रिडक्शन की स्ट्रेटजी दी, और इन इलास्टिक के केस में आपने प्राइस इंक्रीज की स्ट्रेटजी दी, राइट। फिर उसके बाद आप फर्दर आगे बढ़ेंगे। ये तो फ्रॉम द रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात कर दी, दिस इज यूजुअली गुड इनफ। फिर आपने इसका काउंटर कर लिया। काउंटर के अंदर हमने पहले भी कहा है फ्रॉम द लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि देखें जी, इसके अंदर नंबर वन जो इशू है आपका, जब आप पीडी की बात कर रहे हैं तो बाकी आपने तो इसमें सिर्फ आप प्राइस को क्वांटिटी के कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर ना आप एक्ससीडी को देख रहे हैं, मीनिंग प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स को देख रहे हैं, ना आप इनकम इलास्टिसिटी को देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी नैरो थिंग। फिर इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि देखें जी, देयर कैन बी लाइक कैलकुलेशन एरर्स, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इट कैन बिकम ऑब्सोलीट, राइट। लास्ट ईयर का डेटा इस ईयर पे अप्लाई नहीं हो सकता। सो ऑल ऑफ दोस बेसिक स्टैंडर्ड्स, आई थिंक वी डन अ सिमिलर ऐसे लाइक दिस, इट्स जस्ट स्टैंडर्ड। पीईएस के केस के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई जो है वो बिजनेस किस तरह से यूज कर सकता है, भाई यूजेज इज मोस्टली मेरी नजर के अंदर, तो पीईएस का जो यूजेज है वो ये है कि इफ इकोनॉमी के अंदर डिमांड में चेंज आता है जिसकी वजह से प्राइस में कोई इम्पैक्ट आता है, तो प्रोड्यूसर किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को हेल्प कर सकता है, अपने स्टॉक को बिल्ड कर सकता है, राइट। सो फॉर अ बिजनेस दैट इज व्हाट द की फैक्ट हियर इज, that if the demand for a good is increasing and you suspect that the prices will go up, अब आप उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, राइट। उसकी सप्लाई इलास्टिक है कि उसकी सप्लाई इन इलास्टिक है, दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। तो फर्म, व्हाट द फर्म इज गोइंग टू डू इज, लेट मी मूव दिस ओवर हियर, व्हाट द फर्म इज गोइंग टू डू इज दैट if they are at full capacity, they know that we won't be able to take advantage, so let's invest in it. You understand? लेकिन if we have spare capacity available, तो फिर we don't need to invest. What we need to do is we need to find a way to like maybe like stock our goods and things like that. So this is how the firms can actually use this information. फिर obviously after this, you want to do a limitation of it. Please, 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 in essays के अंदर we've done so much practice of this since day one. तो यू नो आ जाओ अब थोड़ा सा प्रोग्राम के साथ जो है ना बराबर हो जाओ, अब इट्स अबाउट टाइम। अब इसकी लिमिटेशन की, पीएस की लिमिटेशन की बात है कि भाई एक तरफ तो यू हैव अ कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इशू, you might not have money to invest to increase the spare capacity of your business or make an investment, right? So that could be one of the issue. फिर इश्यू ये भी हो सकता है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट बनाते हो, दैट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट। So the problem with sophisticated is that you cannot reduce the time it takes for the product to produce, right? एक जहाज बना रहे हो, उस जहाज को आप उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, एटलीस्ट इट्स अ शॉर्ट रन, इट इज अ वेरी मच a challenging task. But the point is, and again PES के अंदर भी तुम ये बात कर सकते हो कि उसका डेटा ऑब्सोलीट हो सकता है, you know. So this is what they're suggesting. Let me give you a slight overview of it. I agree with the marking scheme. मीनिंग ऑफ पीडी और पीएस जरूर समझाया करो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जस्ट ब्रीफली डेफिनेशंस, ओके। और फिर जल्दी से यूजर के ऊपर आओ। पीडी का रेवेन्यू का हमारा यूजेज जो है वो हमेशा से है, फिर उसका काउंटर आपने कर लिया। फिर उसके बाद पीएस का यूजफुल है इन टर्म्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, स्टॉक, ओवर टाइम, आउटसोर्स करना है कि नहीं करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
और फिर उसकी limitations. Once you've done, consider that fully assesses relative effectiveness of both PED and PES estimates and their implications for business decision making and arrive at a reasonable conclusion. So if in evaluation करके start करो, so I have a small sort of like a suggestion for you over here. This is not a concrete, but it's just a suggestion for you. Um, so in evaluation, the relative usefulness of PED and PES depends on the business priorities. If the firm operates in a highly competitive consumer market, jahan pricing strategy is very critical for your survival, right? So wahan PED might be more useful. This is my value addition here. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा रिटेल बिजनेसेस के अंदर प्राइसेस का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है बिकॉज कंज्यूमर हाईली रिस्पॉन्सिव है बिकॉज आपके कंपटीशन अगर आप इन इलास्टिक हैं आपके कंपटीशन ने प्राइसेस कम कर दी यू गोना लूज राइट हाउएवर फर्म्स फेसिंग पी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स और प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एक्सपेंशन उनके लिए पीएस बहुत रेलिवेंट है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोविड खत्म होगा और कोविड के बाद जब मार्केट्स अपनी नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगी अभी हमने अपनी सप्लाई को कंस्ट्रेंट कर लिया है बट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सिनेरियो वी नीड टू कम अप विद वेज बिकॉज लॉन्ग रन के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक हो गया सो ये इस तरह से हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है सॉर्ट ऑफ लाइक पीएस सप्लाई साइड के लिए है अल्टीमेटली माय फाइनल स्टेटमेंट ultimately both PED and PES terms they both are important so what we can do is कि आप PED को शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हो फॉर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और दूसरे को जो है आप यूज कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी राइट सो इस तरीके से हम अपनी इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं एंड दिस वुड बी और sort of like an evaluative statement for 3B ठीक हो गया so So, question here, and it's much more on the easier side. This one I personally find it easy. Explain what is meant by depreciation of the exchange rate and consider whether a depreciation is likely to increase domestic real output. अच्छा सवाल है whether it will or whether it will not. पहले तो define कर लेते हैं some terminologies. छोटा सा समझा दो exchange rate is the external value of one country's currency in terms of another. But main जो तुम्हारे को I think definition करनी है वो depreciation की करनी है. What is depreciation? Depreciation is when the currency loses its value against other currencies or it weakens against the other currencies. Okay. Um, Depreciation floating exchange rate में यूज होता है जो डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे होती है So once I define depreciation का मतलब, like it's the weakening of the currency against others, then I would like to suggest some of the ways through which, like if the demand for the currency, for the said currency, falls, or the supply for the said currency, diagram नहीं मांगा इन्होंने, sometimes they even ask for a diagram in this scenario, तो rises, right? So ये आप इस तरीके से कर सकते हैं. You can suggest some reasons. Reasons बड़े simple हैं भाई. डिमांड का करना है तो बोल दो एक्सपोर्ट गिर रही है और सप्लाई ज्यादा हो रही है तो मतलब इंपोर्ट बढ़ रही है. You could suggest reasons like that. ठीक है, it's open ended. लेकिन डिमांड फॉर द करेंसी सप्लाई फॉर द करेंसी ये लिंक करके वीकनिंग और डेप्रिसिएशन का बताना लाजिम है. फिर उसके बाद वो कहते हैं डेप्रिसिएशन इज इट लाइकली टू इंक्रीज द डोमेस्टिक आउटपुट. तो आई कैन टेक दिस ऐसे इन कपल ऑफ डायरेक्शंस. एक तो हमारा क्योंकि रियल आउटपुट की बात की है तो रियल आउटपुट तो सुनते ही मैं फौरन से सोचता हूँ मेरा एडीएस डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है. So what we already know is that if our currency depreciates, what happens is that the price of export
is likely to fall, and as a result, export revenue is likely to rise. And imports is import की price बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से import is likely to fall. As a result of this, X minus M overall is going to improve, and that will cause the aggregate demand to increase and the real output to increase. So I've made my connection. I should get up to 3 marks for this. But I will also do this side also. कि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल is going to go up, which will cause the supply to fall down. And when supply falls down, um, aggregate supply falls down, and that will cause the aggregate supply, sorry, girega, aggregate supply girega, so real output gir jayega. You remember that cost push wala diagram? So based on that, I have sort of like shown both sides of the coin. If I increase भी हो सकता है output or decrease भी हो सकता है, depreciation can take it either way. Let me show you the marking scheme. I don't know which direction they're taking it, but so yeah, so they're taking it from the very first जो हमने direction लिया है. They're willing to give you 3 marks for it. तो वो करने के बाद evaluation के अंदर obviously we're talking about the capacity ना. देखो, this is what's happening. You remember our LRAS curve? I think we just did it recently. जिसके अंदर we spoke about कि अगर आपका LRAS इधर है, and if your AD is increasing when you have the spare capacity, the real output will increase quite substantially. लेकिन अगर आप almost full capacity के ऊपर operate कर रहे हैं, and if you increase the AD, then real output will not increase. It will remain where it is, right? So you don't have to make the diagram, but just for the sake of evaluation, you could just simply suggest that it depends on the level of spare capacity that you have or you don't have. So uske hisab se it would matter. In fact, you can even talk about आपकी goods की जो elasticity है, वो like for example this side, yeah, ये जो हमने बात की ना कि डेप्रिसिएशन से जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गिरेगा, उससे एक्सपोर्ट राइज होगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू राइज होगा. व्हाट इफ आई से कि जो गुड आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इन इलास्टिक है, और जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो इन इलास्टिक है. सो इवन इफ द प्राइस गोज अप, यू विल स्टिल इंपोर्ट इट. सो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर गोज अप एट हायर प्राइसेस, right? So that will actually cause AD to fall and the whole real output to fall. So that is a perfectly fine evaluation as long as you're making a counter argument in your evaluation that it is not likely to increase real GDP at all times. It depends on something or the other. ओके जी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. आई फील दिस क्वेश्चन वी डेल्ट विद आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द पास्ट, so take a look at it. Assess whether contractionary fiscal policy is likely to be the best policy. Best policy लिखा है, alternative. अगर लिखा होता assess whether contractionary fiscal policy is effective, is is likely to be effective to reduce, then you don't have to do a counter argument. ठीक है, then you stick with one policy. But over here best बोला है, या अगर वो कह देते is most likely to reduce a current account deficit, so you give an alternative. तो लिख लेते हैं इसके अंदर. एक तो नंबर वन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है. जस्ट ब्रीफली ना, ज्यादा नहीं, बट जस्ट ब्रीफली करंट अकाउंट डेफिसिट जरूर समझाओ. वेयर यू से, मेरी नजर में तो यू शुड गो ओवर द होल आइडिया कि करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स होता है, ट्रेड इन सर्विस होता है, प्राइमरी इनकम्स होती हैं, सेकेंडरी इनकम्स होती हैं. जब इन सब चीजों में कलेक्टिवली इनफ्लोज आर लेस देन आउटफ्लोज, तो यू हैव अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट. कितनी लाइन लगेगी, बट दिस वुड बी परफेक्शन. ठीक हो गया.
फिर उसके बाद आपके पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में यू हैव गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। इफ यू गोइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्शनरी वन, दैट मीन्स यू आर एमिंग फॉर एडी टू फॉल डाउन। एडी गिराने के लिए basically what you need to do is you need to reduce the government spending and you need to increase the taxes, income taxes on the people. तो इससे एडी गिरेगा, लेकिन इससे करंट अकाउंट कैसे ठीक होगा? तो आप इसका कनेक्शन बनाएंगे दैट ये आपकी बेसिकली डैम्पनिंग पॉलिसी होती थी एक जमाने में। अब ये वर्ड्स हमारे कोर्स में नहीं है, A2 में है, बट हम बैक इन द डे मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे तो आई विल एक्सप्लेन इट एज डैम्पनिंग पॉलिसी, डिमांड डैम्पनिंग पॉलिसी। तो उसमें होता यह है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है और टैक्सेशन ज्यादा है, तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, right, the disposable income of people, that's going to fall. People will not have a lot more to consume, so consumption will fall. Businesses investments are likely to fall, and that will cause aggregate demand to fall. जब एडी गिरेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जब एडी गिरेगा तो वी कैन से कि एडी गिरने की वजह से प्राइसेस गिरेंगी, और प्राइस के गिरने से हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट आ जाए। और जब डिस्पोजेबल इनकम भी कम होती है लोगों की, तो इंपोर्ट्स भी रिड्यूस होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज लाइकली टू improve. I know I'm going fast on this because I feel that we've done, if you've been taking classes and you've been doing the previously uploaded past papers, this is one of those questions जो बड़ा ही consistently आ रहा है। uh, but is it the best policy? So obviously, what you need to do is you need to have like a counter discussion on this. Okay, will it always reduce or not? So इसके अंदर, from the counter point of view, what I would say is कि, you know what, because of this policy, there are uh, other issues that I can see with this. जब एडी गिरता है हमारा, तो हमने बोला कि एडी गिरने की वजह से एक तो उसका डोमेस्टिक साइड पे इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। दूसरे एंड के ऊपर वी नो देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट का इशू दैट गोज ऑन बिकॉज ऑफ एडी फॉलिंग। लेकिन मैंने इसको इस लिमिटेशन को भी कनेक्ट करना है उसके साथ, ट्रेड बैलेंस के साथ। सो देखो, what might happen is because of current economic growth, टैक्स अब आप लोगों को ज्यादा कर रहे हो, आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट कम है, कंजम्पशन कम है। So what if the businesses reduces investment, and that can actually hurt your long run future? And it is quite possible that in the long run, because firms are cutting down on their output, you won't have a competitive good to sell in the international market, and that might not actually increase our exports, right? And that can be an issue कि long run के अंदर we might not be price competitive as a result of that, क्योंकि हमारा product is not good or innovative anymore. So fiscal can actually hurt us also, uh, because it's going to have an impact on the economic growth and employment in the economy. ठीक है। फिर आपने obviously counter argument करना है इसमें। My personal preference is, क्योंकि fiscal policy demand side है, I would always want you to go for a supply side policy. And when you go for a supply side policy, so obviously you're looking to increase aggregate supply. Aggregate supply can be done through investment in, education and training of the people. और when you do this, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका गुड्स जो है वो एक तो नंबर वन प्राइस कंपेटिटिव भी हो जाता है, और दूसरा उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आती है। तो दैट माइट एक्चुअली ब्रिंग a good fold increase in your exports, and because your product prices have fallen down, imports might also fall, and it might also control this. And then you do the alternative policy, the limitation of the supply side policy, that how it is effective in the long run, and there is an opportunity cost involved in terms of cost.
And that's a problematic situation. You make the counter argument, you qualify for a level 3 answer, get yourself अच्छा नहीं लिखा तो कम से कम तुम क्वालिफाई करके एक लेवल 3 का 6 मार्क तो उठा लोगे. नाउ 6 मार्क्स इज अ फिनोमिनल मार्क्स कंसिडरिंग दैट 24 25 के ऊपर ए आ जाएगा. मेरी नजर में मार्किंग स्कीम आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी. ग्रेड्स, numbers, thresholds. Why? Because kids are getting this awareness that how are we supposed to write essays now. तो आहिस्ता आहिस्ता से जब ये पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो आपका थ्रेशोल्ड भी राइज करना शुरू कर देगा. But then you have a counter argument. I've made one evaluative statement for a counter argument. Let's go over it. Because is it the best or not? That's what we are discussing, right? In evaluation, a contractionary fiscal policy can be effective in the short run, particularly when you want to improve the current account deficit, right? So it is relatively direct and immediate method of reducing spending in the economy. However, its potential side effects is on the economic growth and employment, uh, but it's not good for the long run. Moreover, if the underlying causes of deficits are simply supply side की weakness in your economy, like for example, अगर आप कह रहे हो कि आपके exports कम है और imports ज़्यादा हैं, तो I can think of two things mainly. One is कि if your exports are not more than your imports, हो सकता है कि economic cycle down है, global economic cycle is down. That's why you're selling less, but not a problem when economic cycle goes up again. Problem solved. But if your exports are not rising because of structural issues का क्या मतलब हो गया? Your quality is not good, you lack price competitiveness. तो उस केस के अंदर जो है आपकी contractionary supply side policy is not going to work in your favor, right? Then you need supply side policy where you really need improvement in your overall infrastructure of the economy, right? Or the education level of the people. So therefore, while contractionary fiscal policy may be useful in certain circumstances, it is unlikely to be the best or only way to reduce current account deficit in the long run. I think that's just added from my point of view. The long run के अंदर तो at least it's not a very good policy. So ये मेरा evaluative statement हो गया इसका, and this is how I would consider my essay. ठीक है? Again, focus on the structure. That's what's more important. आ जाए जी 5B की तरफ हम आते हैं एक दफा. लास्ट टू essays हैं for the day. So देख लें जी. With the help of aggregate demand and aggregate supply diagrams, explain how a decrease in interest rate could cause economic growth, and consider whether economic growth will always result in inflation. Okay, Ji. So how would we go about it? Honestly, the way I would go about it and the way the marking scheme is taking this question, I think I would have gone slightly differently in this one. This is how I would have gone for this question, based again on the current understanding of how things are. With the help of ADAS diagram, explain क्या करो? ADAS को यूज करके क्या explain करना है? Interest rate के कम होने से economic growth को क्या होगा? So I would make myself a diagram, ADAS का diagram, and I would be very, very, very cautious of labelings. I would write price level here, and I would write real output over here. Not P dot L, not just Y, right? I would write this whole sum. चांस ही नहीं देना एग्जामिनर को. AD, AS, and this is my diagram. I should get 1 mark for the labeling of this whole thing. फिर उसके बाद
इंटरेस्ट रेट के कम होने से आई वुड सस्पेक्ट एडी इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट, राइट, दैट इज मोस्ट likely connection that I'm going to make, और मैं इसकी explanation में भी ये लिख दूंगा. So AD is going to shift to the right and the price level is going to go up. And why? Have they asked about it? No, they've just simply asked about economic growth को क्या होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन भी कर लेना चाहिए, जस्ट इन केस यू नेवर नो. तो वी शुड डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे तो दो किस्म की इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल. So I'll just do a simple one and I'll say economic growth simply means an increase in the output levels in the economy, right? An increase in the production of goods and services in the economy. So my diagram, I think it's perfectly labeled. एक label missing है, ये भी डाल ही देते हैं कि E0 से E1 पे हम आ गए. ठीक है जी, अब तो perfect ही हो गया है. Should AS shift as a result of that? यार AS भी shift हो सकता है. I can argue for AS to shift to the right also. कि मैं interest rate के साथ जो है कोई देखो shift AS के अंदर हम ये कह सकते हैं कि cost of production गिर जाए जिसकी वजह से aggregate supply में increase आ जाए, and that is definitely can cause it to happen. बिल्कुल हो सकता है, but it's never usually my first go-to discussion. It's usually बल्कि इनफैक्ट उसके अंदर भी एएस के थ्रू भी कर लोगे तो रिजल्ट तो इंक्रीज ही आएगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई, फंड जो है वो ज्यादा बोरो करके ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. एएस कैन शिफ्ट टू द राइट. Marking scheme is not taking this into consideration, but I think it's perfectly correct. Maybe in the meeting they might have uh, agreed with this. ठीक है. So this is what they're doing. They're saying knowledge understanding के अंदर एक तो एडीएस का पूरा एक डायग्राम हो गया, एक मार्क बच्चों को दे दो उसका. बाकी दो मार्क वो कह रहे हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस के अंदर समटाइम्स पीपल दैट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट अप लॉस ऑफ मार्क्स कि इफ यू हैड नॉट कंसिडर्ड एनी ऑफ दिस, तो तुम्हारे पास फिर एक मार्क मिलता है यहाँ पर. फिर उसके बाद आप एडीएस डायग्राम के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आप उसकी एक्सप्लेनेशन करते कि बोरोइंग बढ़ जाती, सॉरी बोरोइंग कम हो जाती, उसकी वजह से कंजम्पशन या किसी फैक्टर में रिडक्शन आ जाती, उसकी वजह से जो है एडी में ड्रॉप आ जाता, और जो है इकोनॉमिक सॉरी नहीं इंक्रीज हो जाता और एडी राइट पे चला जाता. एंड ऑल वेल, राइट. लेट मी सी. ओ, देखो यहाँ इसके अंदर इन्होंने कनेक्शन नहीं बनाया कि एडी वुड हैव इंक्रीज टू द राइट. आई वुड बी मोर कॉशियस विद दैट, एंड आई वुड से कि मेरा जो डायग्राम के अंदर मुझे क्या देखना चाहिए कि एडी शुड शिफ्ट टू द राइट, और उसकी वजह से रियल जीडीपी के अंदर ग्रोथ आनी चाहिए थी. ऑनेस्टली दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन फॉर दिस क्वेश्चन पर्सनली, एंड आई वुड हैव लॉस्ट मार्क्स. लेकिन कंसिडरिंग द करंट, मेरे ख्याल के अंदर दिस इज व्हाट द न्यू मार्किंग स्कीम वुड लुक लाइक. एडीएस का डायग्राम, फॉल इन इंटरेस्ट रेट की वजह से एडी के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट, रियल आउटपुट इंक्रीज. ये मेरा डायग्राम का तो ये शो होना चाहिए था. मे बी अ मार्क और टू फॉर द डायग्राम, एंड देन अ मार्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन दैट किस तरह से इंटरेस्ट रेट के कम होने से, बोरोइंग के बढ़ने से, सी के राइज होने से एडी का राइज होता और रियल आउटपुट में इजाफा आता. ये आपका एक मार्क का चेन ऑफ थॉट होता, एक से दो मार्क का ये चेन ऑफ थॉट होना चाहिए था. फिर उसके बाद analysis should have been about consider whether economic growth will always result in inflation or not. तो ये मेरा एनालिसिस होना था मेरी नजर के अंदर. तो इसके अंदर ऑब्वियसली व्हाट आई वुड हैव रिटन अबाउट इज कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन आती कि नहीं आती. तो मेरा डिस्कशन फॉर एनालिसिस पर्पसेस वुड हैव बीन समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ कि जब
एडी के अंदर इजाफा आता है, और उसकी वजह, और अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी होती है, अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी होती है, तो एडी के राइज होने से प्राइस के ऊपर लो इफेक्ट या नो इफेक्ट आता। आई एम थिंकिंग द सेम LRAS का डायग्राम इन माय हेड एंड आई एम एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंगली। ओके। लेकिन अगर हम एट फुल कैपेसिटी होते, तो एडी के राइज होने की वजह से the price level would have increased, and much more significant and high increase is what I would have expected it for it to happen. ये मेरी नजर के अंदर, this is what I would have done for my analysis, although they're saying कि ये आप evaluation के अंदर लिखें ये वाली बात। ठीक है, क्योंकि ऊपर वो लोग डायग्राम और उसके जो है, ये ऊपर जो ये चीज जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है ना, ये एनालिसिस के अंदर लेके जा रहे हैं लोग। ठीक, सो इट्स वेरी ट्रिकी कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस। मैं तो इसको एनालिसिस में लेके गया होता, और फिर मेरी इवेल्युएशन वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्या इवेल्युएशन? दैट, नहीं सॉरी, आई एम डूइंग 8 मार्कर ना। या सो 8 मार्कर के अंदर इवेल्युएशन मुझे ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है, तो आई वुड हैव जस्ट सिंपली सेड दैट इन इवेल्युएशन whether inflation will happen as a result of economic growth depends on whether, due to rise in AD, whether there was capacity available or not. तो उसके हिसाब से it would have been। and अगर तुमने सप्लाई साइड वाली अप्रोच लेनी है, कि तुमने कहा कि भाई एएस की वजह से, मैं तो कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से एएस वुड हैव इंक्रीज, तो उस केस के अंदर तो यू वुड हैव सेड कि नहीं, इन्फ्लेशन तो नहीं आएगी, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होने की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आएगी, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज शिफ्टिंग टू द राइट, so that would have not caused it to go up. But again, marking scheme में उसको कोई नहीं है। I don't know what during the examination, examiners meeting, would they have agreed to it or not? मेरी नजर में they would, अगर ये तुम्हारा मार्किंग स्कीम लॉन्च हो गया है, तो that means कि they have not accepted it. Uh, Varna, definitely in the meeting, they would have argued for it, and they would have factored that in. They're not, at least for now in this one. ठीक है. Finally, going to our last bit of the day, assess करें कि whether economic growth is always desirable. So evaluative statement is about always or not. Economic growth के फायदे और नुकसान आपने बताने हैं on an economy. Obviously, the reasons matter. कि economic growth के reasons is rising AD, or if it's rising AS. Is it a potential growth? Is it an actual growth? बहुत सारी बातें हैं which need clarity in this one. I'll just go over the marking scheme for this one because it's a very, very simple question in my understanding. But it needs a lot of explanation. मेरी नजर में जब तुम एक टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करोगे दोबारा इसके अंदर, तो मेरे ख्याल के अंदर यू शुड एक्सप्लेन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल। एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल। एक्चुअल ग्रोथ कब होती है? जब आपका एडी राइज करता है और आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। यही जो पीपीसी में फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड्स द कर्व। पोटेंशियल के अंदर we're talking about some long run changes taking place, right? ये शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन के अंदर आप एक्चुअली आपकी कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हायर इनकम एंड अच्छी नौकरियां, एंड गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा थ्रू टैक्सेशन, अच्छी competitiveness फ्रॉम आवर सप्लाई साइड एंगल, increase in both consumer and business confidence and life expectancy, तुम और भी बातें कर सकते हो इसके अंदर। But from the counter point of view, we have standard counter
ऑफ इट, जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है और इनकम्स बढ़ती हैं, तो एक तरफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन के चांसेस होते हैं, दूसरी तरफ तुम्हारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ राइज कर रही होती है, योर कंट्री इज डूइंग वेल, योर एक्सपोर्ट्स आर लो एंड योर इम्पोर्ट्स आर मोर. Why is your exports low? Because your people are consuming all the goods produced in the country. There is no export angle. And plus, you're importing more because your income, rising income, allows you to import more stuff from abroad. फिर उसके बाद इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं. इनइक्वालिटी प्रमोट होती है, पोल्यूशन का इशू होता है बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज. इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो चांसेस ये होता है कि आपके रिच जो है वो रिचर होते हैं बिकॉज दे आर इन दैट पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम द होल थिंग. एंड जो आपके लो इनकम लोग होते हैं वो बेचारे, दे सी दैट द मुल्क इज डूइंग वेल, लेकिन उनकी तनख्वाहों के अंदर कोई खास इंक्रीमेंट्स नहीं होते एज कंपेयर टू द मनी entrepreneurs are making, right? You do the two counter side, make sure that your level one, I would give you level one, एक से दो mark for economic growth को explanation देने के. Then benefits के I would give you level two. How much you write depends on लेवल टू का तुमको तीन मिलेंगे कि पांच मिलेंगे, और फिर काउंटर विल गिव यू लेवल सिक्स. एंड देन योर फाइनल इवेल्युएशन, दिस इज एन इवेल्युएशन का एक sort of like just a small idea. In evaluation, while economic growth brings clear and measurable benefits such as high employment, you can measure government के finances अच्छे हो जाते हैं because government does not need to spend on unemployment benefits and social securities and all of that. And tax collection is high because of rising incomes, fair consumer confidence, and so on. However, there are a lot of environmental problems with this. There's macroeconomic instability that it brings with it, like inequality and stuff like that. So, therefore, economic growth should not be viewed as universally desirable or sufficient on its own. What matters more is that quality, inclusivity and sustainability of growth. मतलब अगर आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, तो क्या वो हर किसी की inclusivity means that it is raising everyone's living standard in your country, not just the few. It's overall improving the quality and it is sustainable. That is, it is long lasting. It is not like one short cycle of economic boom and then you have a collapse in it, right? So uh, suggestion hai, government must implement complementary policies like taxation and environmental reforms to make sure that it's more inclusive and environmental friendly. So sort of like that should be your evaluative statement. And that's that. That's how you do this. ठीक हो गया?